हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब रेडी होंगे आज की मीटिंग के लिए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपके जो भी टीममेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं इस मीटिंग में, आप जल्दी से उन्हें एक कॉल मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ताकि वो ज्वाइन कर ले इस मीटिंग को। बिकॉज वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेशन फास्ट। सो जल्दी से आप अपनी टीम्स को इनवाइट कर लीजिए ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सके आज के सेशन का। ओके। सो माइक, डू वी हैव ऑन द कॉल? या, वी कैन सी यू नाउ। Awesome, हाय, हाउ awesome. आर यू? I'm doing good. How are you? I'm good, and we are also fine. Awesome. Awesome, awesome. मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं माइक को बता रही थी कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं एंड हाउ वी आर डूइंग रियली वेल इन इंडिया। यू वर आस्किंग अबाउट हाउ वी आर डूइंग इन Yeah, इंडिया, टेलिंग yeah, देम for इन द sure. ग्रेड I एंड mean, I think 6 months is a long time, right? We're already 6 months pretty much into the year. So it's a good yes, time to reflect on the progress, how much progress has been made. And from what it sounds like, you guys are really producing some serious results in terms of the goal directors. My question is always how many new believers, how many new builders, because that's a reflection of what the next leaders are going to be. But from what it sounds like, you guys already have some really solid goal directors coming up, which is exciting. yeah, And these are people that are new. So people that were not even involved when I was back there in November time, right? Like you guys have yeah. brand new leaders coming up, which is very exciting. Absolutely. Thank you so much for helping us out or in past 6 months. Your mentorship has been absolutely helpful. And thanks a lot. Thanks a lot for helping us out. For sure, for So sure. let's dive into the session for today. Yeah, for sure. So, I always feel like the less that you say, the more meaningful it can be. So we'll keep it short once again, but it'll be very specific to the topic. Okay. So handling rejection without losing momentum. And I think that's a really, really good topic to cover. So I have a way of hopefully illustrating this message to you guys. ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग रिजेक्शन। हम कैसे रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं अपने मोमेंटम को लूज किए बिना। आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही कंसाइज रहेगा, बेसिकली शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको मैं एक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बट मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपके जो टीममेट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं इस मीटिंग में, आप जल्दी से उन्हें इनवाइट कर लीजिए सो दैट वो भी इस मीटिंग का एडवांटेज ले सकें, अंडरस्टैंड कर सकें आज के सेशन को। ओके भाई। Okay, awesome. So I'm going to talk about just this example. I was thinking about how do I explain this to you guys, and I think this is a good way to talk about it. So, we all watch sports, right? And right now the World Cup is happening. This is every country in the world is playing soccer. It's a big deal. So in the US, there's football. It's different than soccer. But my question to you guys is, if you knew the final score, like if you already knew what the final score was going to be, would you panic if you were losing in the game? Or would you be excited to see the comeback? My example is, let's say you're losing 5-0, but you know at the end of the game it's going to be 6-5. So your team is going to win. Would you be discouraged? Would you be panicked? Would you be upset? Would you be frustrated? Or would you be excited because you know that you're going to come back to win, right? So think about that for a second. ओके। सो अब सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस मीटिंग को, तो माइक एक एग्जांपल के साथ आपको कुछ बताना चाह रहे हैं बेसिकली, और वो एग्जांपल ले रहे हैं सॉकर का, फुटबॉल का, जो अभी वर्ल्ड कप जो हर कंट्री में हो रहा है उसको लेकर के। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया और एक क्वेश्चन बेसिकली हमसे पुट किया है, आपसे पुट किया है। आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको पता चल जाता है कि फाइनल स्कोर क्या होने वाला है और आप जीतने वाले हैं। लेट्स से अभी गेम स्टार्ट हुआ है, आप 0 पे हैं, सामने वाली टीम 5 पे है ऑलरेडी। बट आपको पता है कि एट द लास्ट ऑफ दिस गेम आप जीतने वाले हैं, आपका स्कोर 6 होने वाला है और ये टीम 5 पे ही हारने वाली है। तो क्या आप पैनिक करेंगे? क्या आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे? क्या आप डिस्करेज रहेंगे? क्या आप बुरा महसूस करेंगे? आप बेसिकली लेस एक्साइटेड होंगे?
इज दैट अ यस? क्या आप लेस एक्साइटेड होंगे, या अगर आपको पता है कि फाइनल स्कोर में आप जीतने वाले हैं, क्या आप उस जीत को लेके एक्साइटेड होंगे कि आपका जो कमबैक होने वाला है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आप गेम जीतने वाले हैं इवेंचुअली? तो आप क्या महसूस करेंगे? आप एक्साइटेड होंगे या आप पैनिक करेंगे? आप परेशान होंगे या फिर आप खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे? Right. So that's the thing, right? Like the mentality, and the reason I'm bringing this up is because what if your business was the same? If success was guaranteed, right? How long would you stay discouraged? The destination doesn't change because you know you're going to win, right? The only thing that's changed is the timeline. Did you win in the beginning of the game or at the end of the game? That's the only difference. But would you stay discouraged if you knew that you were going to win at the end, right? Same in the business. या सो यही सेम चीज हमारे बिजनेस के साथ भी होती है। कि आपकी जो सक्सेस है वो तो गारंटी है, बट अगर आपको पता है कि आपकी सक्सेस आनी ही है 100%, तो फिर भी आप डिस्करेज महसूस करेंगे। आपकी डेस्टिनेशन चेंज नहीं होने वाली है, बट टाइमलाइन चेंज हो सकती है। हो सकता है आप पहले जीत जाए और आप बाद में एफर्ट पुट करें, या फिर आप अभी एफर्ट पुट कर रहे हैं बट आपको पता है बाद में आप जरूर जीतने वाले हैं। यही सेम सिचुएशन हमारे बिजनेस के साथ भी होती है कि जब आप एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एट द एंड आपको पता है कि आपकी जो सक्सेस है वो डेफिनेटली आने वाली है। और जब आपको पता है कि आपकी सक्सेस आने वाली है तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप एक्साइटेड होंगे, या फिर आप पैनिक होंगे, परेशान होंगे, डिस्करेज्ड होंगे? माइक। Okay. So let's continue. This is a game, and I encourage you guys to go look this up. This is Tom Brady. Some of you guys might recognize him. He's very popular in the US, but worldwide, I think people kind of know who Tom Brady is. He played the quarterback for the back then for the New England Patriots. But this game is a game that was played in like 2017. Okay. So it wasn't recent. This was like 10 years ago. But it was a game where Atlanta was winning the game 28-3. And there was only 2 minutes left in the third quarter. There's four quarters. At this time, at this point, everybody thought the game is over. Okay. Like everybody thought it's over. It's done. The game is done. To come back from that type of a deficit, it's impossible to come back from that type of a deficit. Okay. I remember watching the game with my friends and we were all thinking it's over. We were even changing the channel to say, let's watch something else. This game is over. This is the final game for the championship. Okay. So this is a big game, the Super Bowl. All right. And some of you guys might know what that is, right? The Super Bowl is a very popular event in the US. So from this moment on to the final score, okay, the final score was 34-28. If if you would have told me that that was going to happen, I wouldn't have believed you. Okay, like nobody could believe that had happened. And everybody, when we heard that there was a comeback, people got excited. People were, started watching. It was a miraculous thing. Okay. The point I'm trying to make is when you're building your business, do you work with that same type of thought process? Because Tom Brady, if you look at him, he didn't look discouraged. Even though his team was losing so bad, he was still smiling. He was still okay because in his mind, he already won. Make sense? So I think that's what's kind of cool about people in sports, but it's the same for the business. I always talk about, early on in my career, I was always excited, always happy because I knew where I was going. It's the same thing for you guys, right? Like, even if it's not going well, even if you're getting rejection, but you know what you're doing, you stay the course, you're going to get the result in the end. Absolutely. So, can we go back to the previous slide, Mike? Yeah. या थैंक यू। सो एक एग्जांपल माइक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप सुनिएगा जरूर। बहुत ही मोटिवेटिंग है फॉर श्योर, ये बहुत आपको इनकरेज महसूस होगा। सो टॉम ब्रेडी के बारे में बता रहे हैं। 2017 का ये गेम है सुपर बॉल, जो कि एक बहुत पॉपुलर शो होता है, पॉपुलर टूर्नामेंट होता है बेसिकली यूएस में। सो उसमें ये टॉम ब्रेडी हैं जिनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये एक सॉकर का गेम था जहाँ पे ये
4 क्वार्टर्स होते हैं, थर्ड क्वार्टर में उनका ये स्कोर था। और इनकी जो टीम थी वो हार रही थी। इनफैक्ट मतलब इतने इतना बड़ा डिफरेंस था इनके स्कोर में। जो दूसरी टीम है वो 28 पे थी और इनकी टीम 3 पे थी। और इन्हें सिर्फ एक क्वार्टर में, अभी 2 मिनट रह गए थे और एक क्वार्टर बचा था, उसके अंदर इन्हें ये स्कोर को बीट करना था। सो जब ये स्कोर आया तब हर किसी ने सोचा कि अब ये गेम खत्म है, टॉम ब्रेडी की टीम हार गई है बेसिकली, और वो इस चीज से रिकवर नहीं कर सकते। और इस टाइम पे अगर हमने बोला होता कि ये टीम जीतने वाली है तो शायद कोई भरोसा नहीं करता। और यही सेम चीज हुई। बट आप देखेंगे टॉम ब्रेडी के फेस पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी कोई डिस्करेज महसूस नहीं कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अपने माइंड में जीत चुके थे। और जो फाइनल स्कोर था वो आप सबके सामने है। कैन वी गो बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड में? Yep. या सो जो फाइनल स्कोर था वो ये था, टॉम ब्रेडी की टीम ऑलरेडी जीत गई थी, 34 से उन्होंने जीता था। और अगर कोई ये बोलता कि थर्ड क्वार्टर में आके कि आप जीतने वाले हो या टॉम ब्रेडी की टीम जीतने वाली है, तो शायद उस पर कोई भरोसा नहीं करता। बट आप देखेंगे उन्हें पता था, टॉम ब्रेडी ने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, उनकी पूरी टीम ने गिव अप कर दिया था, बट उन्होंने अपने आप को पुश किया क्योंकि वो अपने माइंड में ऑलरेडी जीत चुके थे और उन्होंने फोकस किया विनिंग के ऊपर। एंड इन द लास्ट क्वार्टर में सारी चीजें चेंज हो गई, बोल सकते हैं वो पासा जो था वो पूरे तरीके से पलट गया एंड ये टीम जीत गई। सो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो माइक अभी हमें बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि सक्सेस आने वाली है फॉर श्योर, और आप डिस्करेज्ड हैं या आप खुश होंगे उसके लिए ये आपको डिसाइड करना है। सो अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, बट आप अभी इस टाइम पे शायद पैनिक कर रहे हो, या अगर आपको पता हो कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो क्या आप पैनिक करेंगे या फिर आप एक्साइटेड होंगे? ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था जो माइक ने हमारे साथ शेयर किया। ओके माइक। Okay, excellent. So there's another game, right? Baseball. You guys play cricket. Baseball is the more of an American thing. But the baseball lesson is very powerful, where it basically talks about the law of averages. And if you talk to a if you approach the baseball game a certain amount of times, let's say 10 times, 7 out of those 10 times, you're not going to make a hit. You're not going to get on base. But the 3 times you will get on base. And if you get on base and you do that enough times, your team will win. That's the way the game of baseball works. What's crazy is that it's very hard to do, but the best players in the world can maintain 3 out of 10. I was thinking about how is it that they do such a thing? Here's what I believe. What I believe is when I watch the game, players that are very, very good, they don't get psychologically psyched out when things are not going well. They have the routine, they have their system, and they stick to it. And they know at 10 times, they're going to hit 3 times. That's basically it. Other players, what they do is they get frustrated, they change their approach, they change everything, and then it doesn't work out. And then they're out 10 out of 10 times. Being consistent is the key. Okay. Stick to your game plan. But 3 out of 10 is considered amazing in baseball. The funny thing is that in USANA, it's the same thing, right? 3 out of 10 is amazing. If you talk to 10 people and you're signing up 3 out of every 10, you'll be completely successful in your business. Like there's no doubt about it. 3 out of 10 is phenomenal. Okay. But most people don't look at it that way. Most people talk to one and they get one no, and then they're discouraged versus thinking, I need to talk to 10 to get 3. That's the mentality. या सो अब एक दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है द बेसबॉल लेसन जो माइक बता रहे हैं। कि जब बेसबॉल का गेम होता है उसमें जो प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो प्लेयर्स 10 में से 3 का स्कोर मेंटेन करते हैं कि अगर 10 बार ही बॉल फेंका जा रहा है तो वो 3 बार तो हिट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मतलब आप देखेंगे 10:3 का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। एंड इसका सेम एग्जाम्पल हमारे बिजनेस को लेकर है जो माइक देने वाले हैं। कि जो लीडर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, बेसिकली वो 3 का स्कोर कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी खेलने की जो कंसिस्टेंसी, उसके ऊपर। नाउ इन यूसाना जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में भी 10:3 का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाता है।
कि आप जब 10 लोगों से फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो उसमें से 3 कन्वर्जन्स होती है, और वो एक अच्छा स्कोर है जो आप मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो लीडर होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं। वो एक ही जगह हिट करते रहते हैं, एक ही जगह बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, मतलब वो अपने प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और उसके ऊपर काम करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, और वो वहां से रिजल्ट जरूर निकालते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो कि सिस्टम शायद बनाते हैं बट उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं करते, और अगर रिजल्ट नहीं आता फिर सिस्टम को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। तो जब आप अपने सिस्टम को चेंज करते रहते हैं तो आज से आपको रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आप शायद सोच रहे थे या जितना आप चाहते हैं, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं सिस्टम को, चीजों को, प्लेटफॉर्म्स को भी मे बी। ठीक है। सो यहाँ से हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और हमें कोशिश ये करनी है कि हम भी अपना 10:3 का स्कोर मेंटेन करें और कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्यादा फोकस करें जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। Okay. So back to the law of averages. I think in our business, it comes down to conversations. Okay. Those are like pitches in baseball, but conversations. Out of 100 conversations, you can't expect everybody to be interested. Okay. It's not going to happen. 100 conversations, maybe 30 will be interested. Out of 30 that are interested, 10 you'll be able to present to. Out of the 10 you present to, 3 will be enrolled. That's the funnel. And then trust that process. Don't deviate from that process. You only need to get 3 to get the ball rolling in this business. एब्सोल्युटली। सो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस की। हम जिस बिजनेस में है वहां पे लॉ ऑफ एवरेजेस काम करते हैं। सो फॉर एक लॉ ऑफ एवरेजेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल आप 100 कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, आप 100 लोगों को पिंग कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रीच आउट कर रहे हैं, जिसमें से 30 इंटरेस्टेड होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। और जब आप वो 30 प्रेजेंटेशन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हर कोई इंटरेस्टेड होगा, या जब भी आप 100 कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप 100 लोगों को टच कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो 100 के 100 इंटरेस्टेड होंगे। एंड दैट्स फाइन। आपका फोकस होना चाहिए कि वो 30 लोग जो इंटरेस्टेड है आपके कॉन्वर्जेशन में, जो आपके प्लेटफॉर्म को सुनना चाहते हैं, आपको एक ट्राई देना चाहते हैं, आपके अपॉर्चुनिटी में बेसिकली इंटरेस्टेड है, ओपन है सुनने के लिए। उसके बाद उन 30 में से भी फॉर एग्जांपल आपकी 10 प्रेजेंटेशन होती है और उन 10 में से हो सकता है आपकी 3 एनरोलमेंट। बट वो 3 लोग शायद आपके बहुत अच्छे की लीडर्स बन सकते हैं, वो आप उनके आप वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, आपको बस उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। सो Mike, there will be a chances that we might get more enrollments when you're trained enough. For example, if you go and talk to people, you might get 6 enrollments. Is that a I, possibility? I honestly, I've been doing this for a long time, Yeah. and the best people I've ever seen get 3 out of 10. Okay. Even the best people get 3 out of Okay. 10. I've never Oh, gotten more than 3 out of 10. okay. Like Wonderful. sometimes I think I'm getting better and I'll get 10 out of 10. Yeah. But then the next 10 I get 0 out of 10. Yeah. And then the next 10 I get 0 out of 10. So the average is still 3 out of 10. Yeah. Average is Makes sense? Yeah. So the averages are always there. It's hard to beat the averages, to be yeah. honest. It really is. Even in baseball. Even that's why I talk about it. Even in Yeah. baseball, these people are professionals. They make $20 million a year to play baseball, and they still only hit 3 out of 10. Okay. Okay. That's It's amazing. like, yeah. या सो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स है, जैसे माइक से मैंने माइक से ये क्वेश्चन पूछा कि माइक जैसे आप एक प्रोफेशनल हो, तो अब अगर आप लोगों को बताते हो तो हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा एनरोलमेंट्स होती हो, या आपकी 3 की जगह 6 एनरोलमेंट्स होती हो। तो माइक ने वही उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। वो ये कि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, कई बार ये ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मेरी 10 की 10 एनरोलमेंट्स आती है, बट फिर जब मैं नेक्स्ट 10 सेट ऑफ एनरोलमेंट्स के साथ काम करता हूँ तो मेरी
0 एनरोलमेंट्स होती है, तो जो एवरेज आता है वो 3 ही आता है। सो जो अच्छे प्रोफेशनल लीडर्स भी उनका एवरेज 3 होता है। ये इसीलिए माइक ने बेसबॉल का एग्जांपल दिया कि बेसबॉल में बहुत अच्छे प्लेयर्स जो है वो 10:3 का ही रेशो लेकर चलते हैं, और ये अच्छा एवरेज माना जाता है। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो माइक ने दिया हमारे बिजनेस को लेके। ओके माइक। Okay, so as you can see in the funnel process, in the beginning, you're creating awareness, right? That's the conversation. Then when you invite them, that's because they're interested. Then you do the presentation, that's the decision. Then you take action, that's when they enroll. So keep that in mind, not everything is a decision. Sometimes you're just creating awareness, and that's okay. A lot of people don't understand that. And I'm not talking about just USANA, in all businesses. I'll give you an example. Let's say you own a restaurant and you give samples free. Okay, free samples. Okay. And then the owner of the restaurant says, how much money did we make today? We made $1,000. And then tomorrow you give free samples. And they say, okay, how much money do we make today? Same. And the next day you give samples. Same, $1,000. So let's say the next day you give 0 samples and you still make $1,000. So if you're the owner, you think, if I give the samples or I don't give the samples, it's the same. No, it's not. Because what you're doing is you're planting the seed of awareness. And that seed of awareness takes time to grow. You don't just put a seed in the ground and say, give me the tree. It doesn't work like that. You have to water it, you have to tend to it, and you have to be patient. You cannot grow a tree overnight. It doesn't work like that. So keep that in mind as you're doing this to not get discouraged and not lose momentum. Because if you don't understand that, think about it. If you're a farmer and you put 10 seeds and you see no tree the next day, you quit. That's not how it works, right? But if you understand the process, you don't quit. You know, if you just do this over time, you will have it, right? So I want you guys to keep that same mentality. ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं सेल्स फनल की। ये सेल्स फनल कैसे काम करता है? यहाँ पे आप लोगों को लेकर आते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक पाइपलाइन की तरह आप उन्हें एक सेम प्रोसेस के थ्रू लेकर आते हैं। स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। जब भी आप उन्हें टच कर रहे हैं, जब आप उन्हें मान लीजिए आप उन्हें इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट। अब आपने उन्हें प्रेजेंटेशन दी, आपने उन्हें प्रोसेस में लेकर आया, आपने उन्हें काम के बारे में बताया। अब यहाँ पे होगा वो इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो डिसीजन बनाएंगे, और वो डिसीजन कैसे बनाएंगे? वो आपके साथ रजिस्टर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, एक एक्शन लेंगे बेसिकली। सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हर किसी को लेकर आएंगे, और ये फनल सेम चलता जाता है। आप एक्शन लेंगे, एनरोल करेंगे। मान लीजिए आपने 10 लोगों को लेकर आया, वहां पे 3 लोग होते हैं जो आपके साथ एक्शन लेते हैं, एनरोल करते हैं। सो ये सेम प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस ही चलता रहेगा। और यहाँ पे कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं रिजल्ट्स को लेकर के कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। सो वहां पे माइक ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है एक ट्री का। ऐसा नहीं होगा कि आप आज बीज बो रहे हैं और कल वो एक पेड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। उसमें टाइम लगेगा। वो प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम लगेगा। अगर आप एक फार्मर की तरह सोचते हैं तो आप आज बीज बोते हैं और वो कल आपको फल नहीं देगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। आपको रोज उसमें पानी डालना होगा, खाद डालना होगा, आपको उसको समय देना होगा ग्रो करने के लिए, उसके पोटेंशियल तक आने के लिए, और उसके बाद वो आपको फल देना स्टार्ट करेगा। बट आप ये चीज कर सकते हैं कि आप बीज बोते जाएं और उसका फल आपको लेटर ऑन मिलता जाए। हम एग्जैक्टली इसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप नए लोगों को बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करते जाते हैं। सो बेसिकली आप आज बीज बो रहे हैं, कल आपको रिजल्ट जो मिलेगा उसके लिए। Okay, so let's go ahead and move on. All right, so most people need multiple exposures, right? It's not just once. An exposure could be a lot of different ways. Sometimes you're not talking about it directly, but maybe indirectly. Let's say I call, my friend, right? And I say, hey, how's it going? What are you doing this weekend? My friend says, I'm going to go to shopping. And then they ask me, what are you doing? Oh, I'm going to go to a training event this weekend. What do you think they're going to ask? Training for what? Oh, I'm learning how to build my business online and this and that. And they go, oh, okay, cool.
That's an exposure. Make sense? They're hearing that you're doing something. They're hearing that you're involved with something. And that exposure is a small seed that is planted. Okay. Having conversations and creating awareness can be a lot of different ways. Another thing is consuming the product. We talked about this a lot when I was in India, and I thought it was very, very important because I didn't see a lot of it. But always, if I'm with my friends, I'm consuming the product. I'm drinking the product. Okay. Why? Because it's awareness. Essentially, you're creating awareness, and that's important. So once you create awareness, it leads to curiosity. People will have curiosity. What is it? How does it work? Why do you take it? How did you hear about it? All these questions are curiosity questions. Next is familiarity, right? The more you do it, the more it looks normal. It becomes familiar with people. So I think it's important to make it a lifestyle. This is why I say drink your product, take it with you, take the shake with you wherever you go, bring it with you. Why? Because it creates that familiarity. Okay. It doesn't have to be a presentation every time, every single time. It's just you're bringing it up. That builds trust. The more people see it, the more they trust it because they see it, right? I see it everywhere. It's in your house, it's in your car, it's in your pocket. You're using it, you're taking it, your family's taking it. It's like, it builds trust. That leads to more belief. They believe it and then they can make a decision. So most customers buy after multiple exposures. ओके सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एक्सपोजर्स के बाद आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी पे ट्रस्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करेंगे। सो बहुत लोगों को बेसिकली ज्यादा एक्सपोजर्स की नीड होती है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अवेयरनेस से। सबसे पहले आप अवेयरनेस का एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पे जैसे माइक ने एग्जांपल लिया, आप अपने फ्रेंड से वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे तो उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो आज। तो उनके फ्रेंड ने जवाब दिया मैं शॉपिंग करने वाला हूँ, शॉपिंग जाने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर उनके फ्रेंड ने उनसे जब पूछा कि आप क्या करने वाले हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ अपनी। सो उसके फ्रेंड ने पूछा कि आप क्या ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, तो माइक ने एग्जाम अपना जवाब दिया कि मैं एक अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बिल्ड कर सकता हूँ वो ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। सो उस टाइम पे कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, बट उसके बाद ऐसे मल्टीपल एक्सपोजर्स दिए जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उनके सामने। आप अपनी आपकी गाड़ी में प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके साथ रहते हुए प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एक्सपोजर जब आप देते हैं किसी को तो वहां पे क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। क्यूरियोसिटी के बाद आता है फेमिलियरिटी, मतलब अब वो आपके साथ फेमिलियर हो गए हैं, आप उनके सामने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, अब उनको क्यूरियोसिटी नहीं हो रही, वो जानते हैं कि आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। और उसके बाद वो ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे उस चीज के ऊपर। सो यहाँ से ये ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब किसी चीज पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जब कोई प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर रहे हैं, आपने रेगुलरली यूज करना स्टार्ट किया, आपको पता है आपको रिजल्ट आया, तो आपका वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और वो ट्रस्ट इवेंचुअली कन्वर्ट होता है बिलीफ में कि अब उनको बिलीफ है सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो खुद भी ट्राई करेंगे, खुद भी वो बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, देन दे विल इवेंचुअली मेक अ डिसीजन, और उसके बाद शायद वो अपना डिसीजन बिल्ड करें। सो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको मल्टीपल एक्सपोजर चाहिए होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस को लेके आपसे मल्टीपल एक्सपोजर लेंगे, बट आपको उन्हें ये ट्रस्ट दिलाना, ये बिलीफ दिलाना सिस्टम के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर जरूरी है। कुछ लोग हो सकते हैं मल्टीपल एक्सपोजर ले, बट इवेंचुअली इफ अगर वो मल्टीपल एक्सपोजर लेके आपके बिजनेस में आते हैं, आपके साथ ज्वाइन करते हैं या आपके प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ सस्टेन करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक समय लिया है मेच्योरली डिसीजन बनाने में, किसी भी चीज को ट्राई करने के लिए एक डिसीजन बनाने में। उन्होंने बेसिकली परखा है, देखा है, अंडरस्टैंड किया, और फिर वो आपके साथ आते हैं। सो ये था ये डिस्कशन। Excellent. Excellent. Okay. Next is this. It's about not taking things personally. I know it's easier said than done, but you have to not take it personal because I think when you take something personal, it stays with you. Like you carry it with you. Like if somebody says something bad and it's directed at in general, nobody gets offended. But if somebody is making a comment about you specifically, people take it personal and then they hold it with them. I've seen it happen. It's
It's very, very weird to me because I don't take things personal. I don't think I ever have really. Like I've never been that kind of person to take things personally. It's I grew up thinking that way. I grew up, my parents helped me with that when I was little. Don't take things personally, that sort of thing, right? But not everybody is raised like that. Okay. So I'm letting you know now. Now is a good time to start though. It's never too late. Is don't take things personally. You can take feedback if you want, but don't take it personal because you're just going to carry weight with you for too long. So people often reject timing, uncertainty, or priorities, not you. So when they say no, they're saying no to the situation, not necessarily no to you. ओके। सो अब बात करते हैं रिजेक्शन की। सो जब भी हमें कोई रिजेक्शन आता है या जब भी कोई कमेंट ऐसा पास होता है तो हम कई बार उसे पर्सनली ले लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बारे में बात कर रहे हैं माइक। सो यहाँ पे जब भी कोई आपके लिए कमेंट करता है या अगर एक जनरल कमेंट कोई पास कर रहा है तो उसको लेके कोई भी पर्सनली नहीं लेता, कोई ऑफेंसिव नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता है, कोई बुरा नहीं महसूस करता। बट कई बार हो सकता है कुछ कमेंट्स आपको डायरेक्टली आए या कई बार कोई रिजेक्ट कर रहा है आपको डायरेक्टली, तो उसे आपको पर्सनली नहीं लेना है, आपको बस उसे लेट को करना है। आपको उसको अपने लिए होल्ड ऑन नहीं करके रखना है या आपको दिमाग में बैठा के नहीं चलना है इस चीज को कि मुझे ये रिजेक्शन आया या मुझे किसी ने ये कमेंट पास किया। आप चाहें तो आप फीडबैक ले सकते हैं उनसे कि अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया या आपकी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया, आपके प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया, तो वो क्यों किया, क्या फीडबैक आप उनसे ले सकते हैं। बट आपको उस चीज को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि लोग कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अपनी टाइमिंग को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए या वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तो उस टाइमिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं। अनसर्टनिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं, जो शायद प्लेटफॉर्म के साथ आती है, बिजनेस के साथ आती है, या उनके लाइफ में कुछ अनसर्टनिटी चल रही हो तो वो उसे रिजेक्ट करते हैं। और उनकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है जो आपकी प्रायोरिटी है बेसिकली। सो कोई भी कभी भी आपको ना नहीं कर रहा है, ना ही आपके प्लेटफॉर्म को ना कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को ना कर रहा है। वो शायद टाइमिंग को ना बोल रहा है, वो अनसर्टनिटी को ना बोल रहा है, या हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज सेम ना हो जो आपकी है, इसलिए वो ना बोल रहा है। सो हमें कभी भी रिजेक्शंस को पर्सनली नहीं लेना है, ना ही हमें उन्हें होल्ड ऑन करके चलना है। Very good. Very good. Okay. So recovery time matters. So feeling discouraged is normal, but staying discouraged is optional. Okay. So keep that in mind, right? If you feel discouraged, we're human beings. We're not robots. Okay. We feel emotions. We feel discouraged. But when you stay there, that's a choice. You don't have to stay there. You could say it's part of it. Once again, back to the baseball example, back to everything that we talked about, back to this is why I tell it this way, because I want you to remember the example. You struck out, you're out. But in your mind, you're discouraged. I'm out. You're upset. But if I go up 9 more times, I'm going to hit 3 times. Okay. I'm not going to stay discouraged. I'm going to keep going. Winners recover faster. That's what it is. I hear people like Rohan, right? Rohan is out there making it happen. I'm sure he gets discouraged. I'm almost positive he's a human being, right? But I'm willing to bet that he doesn't stay there. He gets over it and he gets back to work. That's why he has success. एब्सोल्युटली। सो अब हम बात करें रिकवरी टाइम की। रिकवरी टाइम मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा डिस्करेज फील करेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप नहीं फील करेंगे। कई बार जब हमें रिजेक्शन आती है तो हम डिस्करेज फील करने लग जाते हैं, हमें उतना मोटिवेशन नहीं आता काम करने का, हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, हम सोचने लग जाते हैं। सो इट्स ओके, ठीक है, आपको टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए उस चीज से। वो डिस्करेज फीलिंग जो आपको आ रही है, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम फील करते हैं, तो हमें वो टाइम लेना है अपने आप को रिकवरी करने के लिए, और फिर आपको वापस से एनकरेज होकर के काम करना है। अगर आप ऑलरेडी डिस्करेज महसूस कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। बट अगर आप उसी जोन में हैं या उसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चैलेंजिंग है, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल, अगर आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को कॉन्स्टेंटली रख रहे हैं,
तो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप उसे साइड करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया माइक ने जो बेसबॉल वाला, उसमें बताया उन्होंने कि 10 टाइम्स अगर कोई हिट, अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर 10 बार उनको बॉल फेंका जा रहा है तो वो 3 बार हिट करते हैं, 7 टाइम्स मिस करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉल फेंका, क्या उन्होंने हिट मिस कर दिया तो वो परेशान होकर डिस्करेज होकर बैठ जाए। उन्हें पता है अगर वो 9 बार फिर से जाएंगे तो वो 3 तो हिट कर ही सकते हैं। तो यही सेम चीज हमारे साथ भी है, अगर आप डिस्करेज महसूस कर रहे हैं ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उसी जोन में है कि आप बिल्कुल आप परेशान है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो आपका ऑप्शनल है, वो आपने चूज किया है कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं। बट जो विनर्स होते हैं वो रिकवर करते हैं फास्ट। सो आपको एक विनर मेंटालिटी लेकर आनी है, अपना विनर माइंडसेट लेकर आना है, क्योंकि जो अच्छे लीडर्स भी है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत बड़े अचीवर्स हैं, वो विनर मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं। आई एम श्योर वो भी डिस्करेज महसूस करते होंगे जब उन्हें रिजेक्शंस आती है होगी, उन्हें चैलेंजेस आते होंगे, बट वो उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलते हैं और फिर विनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको भी जल्दी रिकवर करना सीखना होगा, ताकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ना रहें और अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे, कंसिस्टेंसी के ऊपर, एक्शन के ऊपर फोकस कर सकें। ओके। Okay, excellent. Um, and then the next thing, momentum beats motivation. So what I feel like you guys are having right now, and it's halfway through the year, which is perfect, okay, is it sounds like you guys are building a little bit of momentum. We talked about this when I was out in India, and I said, hey, build momentum, right? Learn from it, let it go. When something bad happens, you learn from it, you let it go, you contact the next person. And if you do that, you're going to start to build momentum. It sounds like you guys are doing that right now. So don't want to say too much here. Just keep doing what you're doing. Okay. You guys are doing great work. एब्सोल्युटली सर, अब हम बात करें मोमेंटम की। मोमेंटम मोटिवेशन को बीट कर देता है। जब आप एक मोमेंटम में हैं, जब आप एक फ्लो में काम कर रहे हैं, और वो आपके मोटिवेशन को बीट करेगा। सो यही माइक बता रहे हैं कि जब वो इंडिया आए थे लास्ट ईयर नवंबर में, तब उन्होंने यही डिस्कशन किया था और उन्होंने वही बोला था कि आप जो जो एक्शंस आप ले रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, अगर उससे रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप उस प्रोसेस से सीखें और फिर दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दें। सो आप एक प्रोसेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोसेस में इफेक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उससे सीखें और फिर आगे बढ़ें, उस चीज को होल्ड ऑन करके ना बैठे। क्योंकि मोमेंटम जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है और वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। Okay. So stay long enough to win. There's a really cool book. I recommend it. It's already old. So when you read it, keep that in mind. It's outdated and nobody has written a new version of the book. So we have to use the old one. But in the book, it's really, really good. Like it helped me so much when I first started. Like it was game changing. So the book is called Your First Year in Network Marketing by Mark Yarnell. I highly recommend everybody read that book, every single person on this call. If you don't like to read, you can download the audiobook and listen to it. The reason why I bring this up is because the book, in the first few pages, like not even chapter one, like the in the introduction, so not even the first chapter, it says it says if people stick in network marketing for 10 years with the same company actively, 90% of people are successful beyond their wildest imagination. That's what it says. So I remember when I first signed up, I wrote down my goals. And one of my goals was to stay with it for 10 years. That was it. I made a 10-year commitment the first day. And it's funny because it did take that long to really see success. I mean, I had success in the first like 2, 3 years, but after 10 years, I had a lot of success in the business. So what I'm saying is take it to heart, trust the law of averages, shorten your recovery time, but more important, stay in the game long enough to see the final score. Don't quit in the third quarter. या ओके।
अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग इनफ रहने की सिस्टम के अंदर, आपकी गेम के अंदर, ताकि आप जीत सके। और आपको एक टाइमलाइन देने की जरूरत है किसी भी चीज को जीतने की। तो यहाँ पे एक बुक जो माइकल ने रिकमेंड करी है, दैट इज योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय मार्क। तो इस बुक में वो बता रहे हैं कि शुरुआत के कुछ पेजेस में ही ये चीज मेंशन्ड है, और ऑथर ने ये मेंशन किया है। या द बुक नेम इज योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय मार्क। ओके। सो ये बुक है, आप चैट बॉक्स में मैं डाल दूंगी बाद में। इस बुक में पहले कुछ पन्नों में ही ये चीज मेंशन करी है ऑथर ने, कि अगर एक इंडिविजुअल अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर शुरुआत के अपने 10 साल देता है एक्टिवली एक ही कंपनी के साथ, कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हुए, तो वो 90% सक्सेसफुल होगा। सॉरी, जितने भी लोग होते हैं, तो 90% ऑफ द लोग अगर ये एक्टिविटी करते हैं कि वो शुरुआत के 10 साल अपने करियर के देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक्टिवली एक ही कंपनी में, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। माइक अपना भी एग्जांपल दे रहे हैं कि स्ट्रेंजली उनको भी इतना ही समय लगा अपनी सक्सेस को हासिल करने में, जब उन्होंने युसाना के साथ काम करने की शुरुआत करी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्ट करें लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर। आपको पता है कि आपको टाइम लगेगा, और आपको जरूरी है उतना टाइम देना सिस्टम में, एक्टिवली मेहनत करते हुए काम करते हुए, ताकि आप रिजल्ट्स देख सकें। यहाँ पे वही एक एग्जांपल माइक ने दिया जो फुटबॉल वाला हमने पीछे देखा, कि आपको फोर्थ क्वार्टर तक वेट करना होगा। अगर आप थर्ड क्वार्टर में ही छोड़ के चले जाएंगे, तो शायद आप फोर्थ क्वार्टर में आप जीत नहीं पाएंगे। आपको फोर्थ क्वार्टर तक वेट करना होगा, ताकि आप जीत सके। और उस गेम में बेसिकली आप जो भी अपने गोल के साथ आए हैं, आप उसे अचीव कर सके फाइनल स्कोर में जीतने के लिए। या Excellent, excellent. Okay, guys, and that's pretty much it. Okay, the key is to stay in the game. Hopefully, this was helpful. If you guys have any questions, we could take a couple of questions. But other than that, ready to go. किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं माइक से, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर चैट बॉक्स में डालिए। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, हम आपको हेल्प करने के लिए है यहाँ पे। द बुक नेम इज योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। I'm writing it down in the chat. Oops, Mark ओके। Yarnell. थोड़ी पुरानी बुक है, बट आप जरूर पढ़ें, इसमें आपको काफी वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा किसी के कुछ क्वेश्चंस? Sorry, it's spelled yarned, but Mark Yarnell. या नो But yeah, such a good book. It's so good. So good. I wish somebody would rewrite that book, like rewrite it into like a modern day version. या Maybe we need to do it, right? Maybe that's our Why don't job you is do to it? rewrite it. Yeah. Like, Yeah. you pretty much have a lot of experience. Mike, can you Yeah. can you answer this question? How Yeah. for how long you have been in Yosana? Because we have new It's people also on the session, and they would like love to know yeah. more about you. So can you just Yeah, brief for about sure. your journey? Yeah, for sure, for sure. So it's been 20 years now. So imagine I started when I was 23 years old. I'm 43 years old now. And it's been a really, really cool journey. In terms of like success and stuff like that. Um, I feel like people, when they think about success, they think about, fancy cars and fancy homes and fancy watches and, all that kind of stuff, right? Jewelry, all these things. Um, the truth is I've experienced all of that, which is really nice. I've had fancy cars and all that. But at this age now, what motivates me now at this age is really to retire. And I do it because I love it. Sure, I like to make money and all that, but like I just want to retire. I want to just enjoy my life and do the things that I want to do. So some of my passions and things that I enjoy to do are traveling. And because of this business, I've traveled to 120 countries exactly as of now, which has been a huge blessing. Like I feel so lucky and fortunate to have seen so many parts of the world, including Russia and the Ukraine before this whole global conflict. Um, I've gone to remote parts of the world like Easter Island, and I've seen all seven wonders of the world. And the Taj Mahal was the last one in India, Yeah. which I saw last year. Yeah. So there's been a lot of exciting things that have happened.
And as of right now, what I'm working on is, you know, my parents are getting older, so I want to take care of my parents. I think everybody kind of gets to that age where your parents are now like your children, and my parents are like my children right now. So I'm working out how to manage them because I can't stop my life because of my parents. Makes sense? But at the same time, I don't want to ignore my parents because I want to live my life. Like you have to find the balance. So what I'm doing right now is I'm buying a new home, and the new house that I'm buying is a very, very big home. It's it's very big. It's 3 stories, and it's 5,000 square feet, which is a very big home. It's 7 bedrooms and 4 bathrooms. Okay, 3 stories. But the reason why I have this house now is because on the first floor, I'm going to have my parents. There's 3 bedrooms on the first floor, 1 bedroom on the second floor, and 3 bedrooms on the third floor. So that's how it's set up. So I'm going to be on in the middle floor. My parents are going to be on the first floor, and then the top room is for my children if I ever have children or if I ever get married. I'm not married yet. I have no children, so I don't know if that's going to Yeah. happen, but that's the next part of my goals, you know, is I want to find somebody, I want to meet a special person, and I want to get married. I want to have children, and it will be the full family dynamic. My parents, me, and my children. Like it's all in one house. So that was my plan to do it that way. But a big part of that is because of USANA. Like, how else could I have done it? Okay, so you have different goals at different times. I still like to travel. I still like to do those things, but I'm very excited about taking care of my parents and just spending time with them in their late years because, you know, they're getting a little bit older, and I I've been in this business for 20 years, so I've met people who, you know, who when I joined and I was 23, they were 70 in USANA, and now they're 90 years old and they're still alive and they're still going, you know. And then there's some people who have passed on, right? And those people who have passed on, their kids have taken over their USANA business. So that's kind of cool. I've seen that too, where it goes from the parents pass away, leave the business to the kids, and the kids take it. And I'm like, wow, it's not just a you thing, it's a generational thing. It's kind of like when I pass away, I want to leave my house for my children, right? Okay, so I want to leave them the house. I want to leave them my business. I want to leave them. Makes sense? It's like you could leave something for generations to Yeah. come. Legacy. I, yeah, Legacy. legacy. I never thought like that when I first joined. I just said, I want to pay my bills. I want to, you know, buy a car, you know, but now after 20 years, I look back and I go, it's changed my life. It's changed my parents' lives, and it's going to change hopefully my children's life one day. Um, but it's also not just my own personal family. It's I think about how many people I've met all over the world, and it's very nice to hear, "Hey, what you said really made a difference." And I'm like, "Thank you. I'm glad." You know, I don't do the business to impress people, or I don't make money to impress people, but I do it to hopefully inspire people because I want you to do it too. You know, in most jobs, it's like, I'll do it, but you stay low. Here it's, I'll do it and you do it. Let's do it together, right? It's like, that's the culture and the dynamic of USANA. And it's rare. It's not like that everywhere. You know, it's like that here, but it's not like that everywhere. Yeah. Okay. Thank you so much, Mike. I don't think so. We need translation for that, as I can see hearts and thumbs up and so many hearts coming up. And it was an inspiring journey. Thank you so much for sharing For once sure, for again. sure. And My it pleasure. was very inspiring. I'll So, for those of you guys who follow me on social media, right? You can find me Mike.callejas. I'll be posting I get the keys to the new house. I get them on Thursday. So I'll be posting so you guys can see what I'm talking about, like the whole vision of what I'm talking about. Yeah. oh, wow, that's amazing. Yeah. I'll be there. I'll be Okay. there to check. Okay. All right, guys. Take Okay. care. Thank Thank you you guys. so much, Mike. Thanks All a right. lot for All this right. amazing session. And I Cheers. hope आप सबको बहुत वैल्यू मिली होगी आज के सेशन से. See you in the next session next For month, sure. Mike. Thanks a We'll see you lot. guys. Take care, guys. Okay. Bye.